Namaste friends, welcome to Dr. Varsha Gaitonde's channel. In this lecture, I am going to talk about seed dormancy. That's a typical condition in plants which may be a boon or bane that is decided by time factor only. When we talk about seeds or its germination, there are three important factors. One is dormancy, second is quiescent phase, and the third one is dead seed. When a seed is called in dormancy condition, that is when the favorable conditions are available but still the seed is unable to germinate, that is a condition known as dormancy. Quiescent stage is when favorable conditions are not available and seed will be germinated or it will germinate when the favorable conditions will be available. That is nothing but quiescent seed or quiescent stage. Dead seed means when seed is having all the capabilities of germinating, means it was provided with many of the conditions which are favorable for it, as well as the environmental condition, means internal as well as external conditions are favorable, still the seed is unable to germinate for any number of years, or it may be for a long duration. When it is unable to germinate means that is nothing but a dead seed. So let us see the definition. Seed dormancy can be defined as the state or a condition in which seeds are prevented from germinating even under the favorable environmental conditions for germination, including temperature, water, light, gas, seed coats, and other mechanical restrictions. Main reasons behind this condition is that they require a period of rest before being capable of germination. That means dormancy is a resting period. That condition may vary from days to months, even to years. These conditions are the combination of light, water, heat, gases, seed coats, and hormone structures. In many species, seeds are capable of germinating because of some inhibitory factors that are incapable of germinating due to inhibitory factors. Such seeds, even placed under suitable environments of germination under which are unable to germinate, that is called as seed dormancy. Sometimes the seeds are quiescent, means such seeds do not germinate because of lack of favorable environmental condition. In nutshell, I can say dormant seed is not a failure. The inability of certain seeds to germinate readily, even when they are provided with all conditions for germination, dormancy may be due to conditions associated either with the seeds itself or with existing environmental factors like temperature and moisture. Coming to the factors which are responsible for seed dormancy, the factors may be environmental, internal or interior, or time mechanism. Environmental factors like negative or positive light requirements. Some seeds require this light for their germination, some may not require. Temperature. Light and temperature go side by side, means they both are interdependent. Then absence of water. As you know, water is another factor which is basic requirement for any seed to germinate. Next is internal factor. Internal factor can also be called as genetic dormancy. Here, seed coat, that means whenever there is no gaseous exchange in seed coat or mechanical effects, immature embryos, low ethylene content in the seed coat, inhibitor absent like coumarins, para-ascorbic acid, etc. Then absence of growth promoters, these are internal factors. Time mechanisms like after ripening, loss of inhibitor or appearance of growth promoters are the factors which are responsible for the seed dormancy. Many of the growth regulators are also responsible. Dormin or abscisic acid are the dormancy inducing hormones, whereas gibberellic acid is a seed promoting, or it is a dormancy inhibitory kind of growth regulator. The factors are enlisted here which are given as reasons of causes of seed dormancy.
light temperature hard seed coat period after lighting germinating inhibitors, then immunity of seed embryo, impermeable seed coat to water, then impermeable seed coat to oxygen, mechanically resistant seed coat, and presence of high concentration of solutes are the reasons. Light is a major factor for any seed to germinate. Some seeds require them and some may not. Some seeds supposed possess inhibitors which are disintegrated by lights. Seeds which respond to light are photoblastic. Gaston and Davies have proposed possible mechanism to control the dormancy by day length, as the mechanism is given here. Malonic acid, which is responsible for, or it is a deciding factor either for growth or dormancy of that particular plant. Whenever under the long day conditions malonic acid is imposed, that means it is a one condition, means some kind of plants which are producing malonic acid under long day plants, they will produce gibberellic acid and that will finally lead to growth of that particular plant. But when short day plant is there and phytochrome hormone is present, their ABA is induced, and even in the presence of malonic acid, dormancy is induced. That means when day length is increased, that means gibberellic acid is promoted and growth is also promoted. Light and temperature effects are interrelated. Some seeds respond to specific day length. The stimulatory effect of light can be replaced by gibberellic acid, potassium nitrate, etc. It has also been demonstrated that effect of light does not affect embryo. Light may or may not be required for germination depending on the species. When using constant temperature for germination of species where light is required, the tests should be illuminated for at least 8 hours of every 24-hour cycle. When alternating temperatures are used, any necessary application of light should coincide with the high temperature cycle. Light intensity should be 750 to 1250 lux from cool white lamps. That means this is a condition when artificial light is provided. The required light for particular temperature is 750 to 1250 lux. Coming to temperature. Seeds may pre-treatment with low temperature quickens germination, whereas high temperature inhibits their germination. Many of the seeds require quite favorable amount of temperature. For example, rice needs 25 to 30 degrees Celsius temperature for their germination in presence of enough water. But some seeds, they may not need that much temperature, means under cooler condition they germinate. Chilling may affect embryo or seed coat or both the parts of the plant. It seems at low temperature ABA present in the seeds is broken down. In some seeds, seed coat causes dormancy and stratification decreases the ABA level. What is scarification and stratification? We shall discuss in the later slides. Then seed coat effect. Dormancy in some seeds is due to the occurrence of hard seed coat. Once removed, the seed starts germinating. Then immature embryos. In ranunculus is a kind of forest species and some members of orchids. Dormancy is due to immature embryo. Inhibitors. Seeds of some species may contain inhibitor which acts as germination inhibitor. They may be located in the seed coat, glumes, some parts of fruit, endosperm, embryo, etc. Means they may be present in any of the live tissue of that particular plant, even it may be a dead tissue. Coumarin, para-ascorbic acid, etc. are some of the very common inhibitors. Remember, coumarin and para-ascorbic acids, which are the internal factors, inhibit the seed growth or seed germination. On the contrary, KNO3, kinetin, gibberellic acid counteract these inhibitors, means GA3, KNO3 and kinetin are the enemies of
coumarin and para-ascorbic acid, and they promote seed germination. Some seeds show secondary dormancy due to lack of suitable environmental conditions. If such egg dormancy is due to carbon dioxide, though the use of some stimulus, mechanical or chemical treatment may be given to promote embryo growth. Secondary dormancy is that where the embryo as well as seed coat are dormant and they are unable to germinate. Coming to the type of seed dormancy, it is divided into innate dormancy, enforced dormancy and induced dormancy. Innate dormancy का मतलब होता है condition of seeds which is incapable of germination even if conditions suitable for seedling growth are supplied. That means all the conditions are favorable but seed is unable to germinate. This inability to germinate may be due to certain species to the embryo being immature at the time of dispersal. मतलब पूरा मैच्योर होने से पहले ही सीड डिस्पर्स हो गया. that is the major cause for innate dormancy. Some viviparous plants may be having a problem of germinating on the plant, means whenever the seed is attached to the mother plant, at that time only it will germinate when certain favorable conditions like water is available on the plant. For example, you might have seen in the fruit of jackfruit, then in case of maize also, in soybean also, when rain is received during the harvesting period means seed will germinate. If such seeds are dispersed and such seeds are stored for the next generation means they will not germinate in the next season. That is nothing but innate dormancy. The second condition is enforced dormancy. That means condition of seeds which is incapable of germination due to an environmental restrict which includes adequate amount of moisture, oxygen, light and suitable temperature. That means environmental restriction are inducing the dormancy. Third is induced dormancy. That means seed dormancy occur when the seed has imbibed water but has been placed under extremely unfavorable conditions for germination. Finally, seeds fail to germination even under more favorable conditions. अभी क्या किया मैंने? Enough water दे दिया जो जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन बहुत वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अगर हम मेज़ की बात करें तो एक्सेस वाटर में कॉज द रॉटनिंग ऑफ पर्टिकुलर सीड. तो बहुत सारा पानी, मतलब बहुत पानी का ज़रूरत नहीं होता है, बस इनफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड. एंड व्हेन हाई अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर input is given, that means the germination may not occur even under the optimum conditions. वो होता है induced dormancy. मतलब induce हमने ही किया है dormancy cause होने के लिए. Another classification is there seed coat dormancy, dormancy due to rudimentary embryo, dormancy due to chemical inhibitor, dormancy due to internal factors and double dormancy. तो इसको हम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. एंड मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स डिस्कस्ड हियर आर इंट्रिंसिक फैक्टर्स ओनली, लाइक रुडिमेंट्री एम्ब्रियो हो सकता है, केमिकल्स हो सकता है, या डबल डॉर्मेंसी हो सकता है, सीड कोट डॉर्मेंसी हो सकता है. कमिंग टू सीड कोट डॉर्मेंसी, it is due to seed coats or other tissues covering the embryo which are hard and are impermeable to soil and oxygen. Seed हमेशा याद रखिए, this is a living entity and that respires when even means जब तक viability है तब तक वो respire करते रहेगा. When it lose the respirating capacity, that means seed is inviable and that is incapable for germination. तो when it is viable, that means it is able to germinate, and even it is viable when hard and impermeable to soil and oxygen, means seed coat impermeable to soil and oxygen है, that means it will go to dormant condition. For example, इसको अक्सर हम मालवेशिया फैमिली जैसे कि कॉटन होगा या भिंडी होगा, इस फैमिली में ऑब्जर्व कर सकते हैं.
The seed coats are apparently permeable to water and gases, but they are so hard to resist the embryo expansion. एक और भी कंडीशन होता है जहाँ पे सीड कोट वाटर एंड गैसेस के लिए परमिएबल होगा लेकिन एम्ब्रियो एक्सपांशन नहीं हो पाएगा, लाइक पिट्स ऑफ स्टोन फ्रूट्स, शेल्स ऑफ नट्स। मतलब जहाँ पे हार्ड कोट होता है उसमें अक्सर ये प्रॉब्लम दिखता है। Second is dormancy due to rudimentary embryos. Some plants shed their fruits before the embryo within the seed has attained the maturity stage to germinate. Such embryos require several weeks to several months after harvest to attain its full maturity so that it can germinate. Example, pinus and plums. पाम और पाइनस में ये कंडीशन मिलता है, वो क्या है? डॉर्मेंसी ड्यू टू रूडिमेंट्री एम्ब्रियो। थर्ड इज डॉर्मेंसी ड्यू टू केमिकल इनहिबिटर्स। सर्टेन केमिकल्स जो कोट में, सीड कोट में प्रेजेंट रहते हैं और एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, दे रेड्यूस और एलिमिनेट, वो क्या करते हैं कि डॉर्मेंसी को इंड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्लांट्स को ले लीजिए, इट इज़ ऑफनली सीन इन मेज ऑल्सो, दे आर reduced by eliminated by leaching with water और adsorption of water। मतलब सोकिंग से या लीचिंग से इस कंडीशन को ओवरकम कर सकते हैं। डॉर्मेंसी ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स, इसको फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी भी बोलते हैं। Here, dormant embryo do not resume active growth even though all environmental conditions are favorable unless the seeds are subjected to moist chilling treatment। मतलब इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, जैसे कि मॉइस्चर का ट्रीटमेंट दे सकते हैं या चिलिंग ट्रीटमेंट मतलब कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एग्जाम्पल, फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड्स ऑफ एप्पल्स, ग्रेप्स, पीच एंड एप्रिकॉट। नेक्स्ट इज डबल डॉर्मेंसी। जैसे मैंने आपको बताया था सीड कोट डॉर्मेंसी एंड एम्ब्रियो डॉर्मेंसी दोनों है, दैट इज नथिंग बट डबल डॉर्मेंसी एंड दिस कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड इन सेरसिस एक्सीडेंटल्स। मतलब सर्सिस स्पीशीज में इस कंडीशन मिल सकता है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी से पेरेनेशन मतलब सीड्स ड्रॉट, कोल्ड, इवन अनफेवरेबल कंडीशंस को पास कर सकता है। देन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, अगर सीड्स का वायबिलिटी कम है या वो डॉर्मेंट स्टेज में नहीं है तो क्या होगा, उसका जर्मिनेशन कैपेसिटी या वायबिलिटी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में ही कम हो सकता है। इवन वो डिस्पर्स होने से, मतलब जहाँ एक जगह में रहेगा वहीं पे उसका वायबिलिटी ख़त्म हो जाएगा। देन इट कैन नॉट कवर ए ह्यूज एरिया, मीन्स इट कैन नॉट ट्रैवल टू डिफरेंट locations with the help of wind, water or any of the animal means biotic and abiotic factors से जहाँ seed move होगा उसके लिए dormancy बहुत ही important है, so that it can move to a longer distance and germinate there and it can propagate well under new conditions। germination under favorable conditions मतलब अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही कोल्ड कंडीशन है, तो अगर राइस ग्रो होगा तो क्या होगा, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव स्टेज इट मे नॉट गिव वेल परफॉर्मेंस। लेकिन अगर वो एक पीरियड के लिए डॉर्मेंट होगा और नेक्स्ट सीजन में अच्छा जर्मिनेशन होकर परफॉर्मेंस दे रहा है, देन वी कैन इवन एक्सपेक्ट मोर यील्ड। बट राइस में एक कंडीशन नहीं होता है। द डे न्यूट्रल, मेनी ऑफ द डे न्यूट्रल प्लांट्स may not undergo dormancy condition। फॉर एग्जाम्पल मेज हो सकता है या सनफ्लावर हो सकता है या राइस हो सकता है, they don't have dormancy problem, so that even immediately after harvesting and storing for some days we may immediately go for sowing in the next season। Fourth is storage। It is because of dormancy that human beings are able to store grains, pulses and other edible for making them available throughout the year and transport to the areas of deficiency। मतलब हमारे सारे जितने भी पल्सेस है या ऑयल सीड्स है, इवन द सीरियल्स, मिलेट्स, इनका ये एक अच्छी खासियत है कि वी कैन स्टोर देम फॉर
लॉन्ग कंडीशन मे बी फॉर 1 year और 2 year, सो दैट जब तक वायबिलिटी है तब तक हम स्टोर कर सकते हैं एंड बाय गिविंग देम फेवरेबल कंडीशंस जर्मिनेशन लेके हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो स्टोरेज के लिए डॉर्मेंसी एक बोन है। इट हेल्प्स डिस्पर्सल। Induce inhibitors present in the seed coat is highly useful to desert plants, मतलब डेजर्ट प्लांट्स जो रेगिस्तान में ग्रो होते हैं उनके लिए केमिकल्स को इनहिबिट करने के लिए या सीड कोट के केमिकल्स को हटाने के लिए डॉर्मेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डॉर्मेंसी अलाउस सीड टू कंटिन्यू टू बी इन सस्पेंडेड animation without any harm during cold or high summer temperature and even under drought condition. Dormancy helps seed to remain alive in the soil for several years and provide a continuous source of new plants. Even all the mature plants of the area have died down due to natural disasters. मतलब जब natural disaster आ जाते हैं तो क्या होता है, अगर germinated या grown plants है they may collapse and they may be lost. लेकिन अगर सीड डॉर्मेंट कंडीशन में है एंड इट इज़ हैविंग कैपेसिटी टू जर्मिनेट आफ्टर मैनी ईयर्स, मीन्स क्या हो जाता है, वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं हो सकता है, हम उसको आगे कभी भी उसको हम पा सकते हैं। Dormancy of seeds is for a long time, which acts as a survival mechanism. Seed can adapt to the adverse situations and resist appropriate germination. But there is no uniform germination. Dormancy makes it difficult to maintain plant population and interferes in seed testing procedure. मतलब dormancy का एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि डॉर्मेंसी हो जाएगा तो यूनिफॉर्म जर्मिनेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, हमें इरिटेट हो जाएगा, मतलब एक सीज़न में एक हो रहा है एंड नेक्स्ट सीज़न में हम दूसरे वैरायटी उसी खेत में डालेंगे तो क्या होगा, ऑफ टाइप्स आ जाएंगे। एंड व्हेन वी गो फॉर ग्रोविंग द सर्टिफाइड सीड और फाउंडेशन सीड तो वैराइटल मिक्सचर हो जाएगा एंड इससे बहुत ही प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है। और जब सीड टेस्टिंग प्रोसीजर में जाते हैं या डस्ट टेस्टिंग में जाते हैं, दैट इज़ डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी, इस टेस्ट में जाते हैं टू नो द ट्रू टाइप ऑफ पर्टिकुलर वैरायटी, इसके लिए भी डॉर्मेंसी एक बेन मतलब डिसएडवांटेज है। कमिंग टू द बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ डॉर्मेंसी, ये लगभग हमने जो पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया है उसका सेम है, लेकिन बस मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ती हूँ। डॉर्मेंसी अलाउस द सीड्स टू रिमेन इन सस्पेंडेड एनिमेशन without any harm during drought, cold, high summer temperature. Dormant seed can remain alive in soil for several years. It helps seed to get dispersal. Small seeds with impermeable seed coat belonging to edible fruits come out of the alimentary canals of birds and other animal uninjured. एग्जाम्पल गावा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बर्ड्स हो या एनिमल हो, दे ईट मैनी ऑफ द फ्रूट्स, लेकिन वो जब एक्सक्रीट करते हैं उसी को तो सीड्स विल रिमेन एज सच। तो डॉर्मेंट, अगर सीड्स डॉर्मेंट रहेगा तो अंडर सच सर्कमस्टेंसेस वो दूसरे जगह में जहाँ पे एक्सक्रीटेड होता है तो उस जगह में सीड को ग्रो होने में हेल्प करता है। डॉर्मेंसी इंड्यूस्ड बाय द इनहिबिटर्स प्रेजेंट इन द सीड कोट इज हाईली यूजफुल टू डेजर्ट प्लांट्स। सीड्स जर्मिनेट ओनली आफ्टर ए गुड रेनफॉल विच डिसॉल्व away the inhibitors. The rainfall ensures the seed a proper supply of water during its germination. It follows storage of seeds for later use by animals and man. Coming to methods of breaking seed dormancy, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस डिस्कशन का। सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए स्पेशली हम दो फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, वन इज स्ट्रेटिफिकेशन एंड वन इज स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन इज नथिंग बट रिमूविंग द सीड कोट डॉर्मेंसी एंड स्ट्रेटिफिकेशन होता है दैट इज ए ब्रेकिंग डॉर्मेंसी by which are related or the factors which are related to embryo. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग डॉर्मेंसी आर nature of dormancy stops when the embryo gets appropriate environment like adequate moisture and temperature.
Seed coat that exist in many species become permeable due to rupturing or smoothing action of natural agents like microorganisms, temperature, absorption by digestive tracts or birds, animals that feed on the seeds. Natural methods अभी डिस्कस करते हैं, जैसे कि completion of over ripening period, leaching of inhibitors present in seed coat, inactivation of inhibitors by the supply of cold, heat, light, leaching of the excess and highly concentrated solutes from the seeds, then production of growth hormones which can neutralize the effect of inhibitors. फर्स्ट वन हमने नेचुरल वे डिस्कस किया. अब देखते हैं आर्टिफिशियली ओवरकमिंग सीड डॉर्मेंसी कैसे होता है. एक्शन विथ हॉट वाटर फॉर टेम्परेचर ऑफ वैक्सेस, टर्मिनेशन ऑफ वैक्सेस, सरफेस इनहिबिटर्स, मतलब वैक्सेस एंड सरफेस इनहिबिटर्स को इनएक्टिवेट करना. देन रप्चरिंग सीड कोट्स बाय फिलिंग, चिपिंग, थ्रेशिंग थ्रू मशीन्स, exposing to heat, cold, light depending upon the type of seed dormancy, by applying hydraulic pressure for 5 to 20 minutes in order to weaken the tough seed coats. Seed coats are treated with concentrated sulfuric acid for removing all traces of mineral acid. तो वन बाय वन देखते हैं. ओवरकमिंग डॉर्मेंसी में स्कैरिफिकेशन, सोकिंग इन वाटर, एसिड ट्रीटमेंट, कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन, ड्राई स्टोरेज, टेरा ट्रीटमेंट विथ केमिकल्स, ये सब है. वाटर में सोक कैसे करना है, जैसे कि सीड्स को 24 आवर्स के लिए कोल्ड वाटर में सोक करो, देन सीड कोट सॉफ्ट हो जाएगा. वॉश ऑफ द इनक्यूबेटर्स, तो इसको इनक्यूबेटर में ड्राई करेंगे. Example, wattle seeds. In some cases, seeds are soaked in running cold water for a period of 8 to 12 hours, which helps in removing the inhibitors. मतलब जर्मिनेशन के लिए जब हम सोक करते हैं, सोकिंग का मतलब ये होता है टू रिमूव द इनहिबिटर्स प्रेजेंट इन द सीड कोट एंड टू सॉफ्टन द सीड कोट. अब डिस्कस करते हैं स्कैरिफिकेशन. जैसे मैंने बताया था सीड कोट की फैक्टर आता है, तो स्कैरिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं. हार्ड इम्परमिएबल सीड कोट इज वीकन्ड और रप्चर्ड बाय मैकेनिकल और फिजिकल मीन्स. तो दो टाइप का होता है, मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन एंड केमिकल स्कैरिफिकेशन. मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन होता है सीड हैविंग वेरी हार्ड सीड कोट व्हेन स्क्रैच्ड विथ सम एब्रेसिव मटेरियल सॉफ्टन्स द कोट एंड मेक इट परवियस टू वाटर. मतलब हम कुछ ऐसा सरफेस लेंगे, हार्ड सरफेस लेंगे, जैसे कि सैंड पेपर हो सकता है या सैंड हो सकता है या हार्ड क्लॉथ हो सकता है, जिसको लेके सीड कोट को रब करेंगे या पंक्चर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो परमिएबल हो जाएगा, एंड दैट इज स्कैरिफिकेशन. केमिकल स्कैरिफिकेशन दूसरा टेक्निक है, मतलब डिपिंग द सीड्स इन स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक H2SO4 or some organic solvents like acetone, alcohol. Even dipping in boiling water breaks dormancy by weakening the seed coat. In some instances, seeds subjected to high oxygen pressure, then immature embryo dormancy may be broken when embryos are allowed to complete their development. Application of some chemicals like potassium nitrate, gibberellin, kinetin, it is possible to contract the inhibitors of seeds. Cyanide, azide, thiourea also induce germination, or soaking the seeds in p-glucosidase because becomes active and cleavages the glucose molecules from amygdalin. The aglycone released in decomposed into hydrogen cyanide and बेंजल्डिहाइड. ये सब केमिकल ट्रीटमेंट्स है. ब्रेकिंग सीड कोट डॉर्मेंसी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, पंक्चरिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ, नीडल, सैंड पेपर आर प्रिफर्ड प्रोसीजर टू ओवरकम सीड कोट डॉर्मेंसी. मैनुअल स्कैरिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि सीड कोट को रिमूव करने के लिए रब कर सकते हैं, बट माइक्रोपाइलर रीजन शुड बी avoided as it is the most sensitive part of the seed where the radical is located. मतलब जहाँ प्लूमुलेंट रेडिकल होता है, फॉर एग्जांपल
अगर सीरियल्स की बात करें, दिस इज कवर्ड इनसाइड और लोकेटेड एट द टिप्स, बट इन केस ऑफ पल्सेस दिस आर लोकेटेड एट वन एंड। जैसे कि आपने देखा होगा एक ब्लैक रिज आपको दिख जाएगा कोई भी पल्स लेंगे, तो इफ दैट इज डैमेज्ड मीन्स जर्मिनेशन विल बी अफेक्टेड। If seed covering structure prevent growth of embryo, remove them to allow germination. Seed coat contains inhibitors that promote or delay germination. They can be leached out by placing the seeds under running water for several hours or soaking. इस्टा ने एक रिकमेंडेशन दिया कि जैसे कि 2 to 45 मिनट्स के लिए सल्फ्यूरिक एसिड में डुबाना है, नहीं तो टू रिमूव द वैक्सी कवरिंग एंड अलाउ इम्बिबिशन, place the seeds in water for 75 degrees for 3 to 6 minutes. Care must be taken not to use high temperatures for long periods or boil the seeds. मतलब 75 डिग्री सेल्सियस हम यूज़ कर रहे हैं, that may be sufficient for only 2 to 3 minutes. अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए बॉयल करेंगे तो सीड अपना जर्मिनेशन कैपेसिटी खो बैठेगा। तो मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन में क्या करते हैं ये हमने डिस्कस किया है, जैसे कि नीडल लेके पियर्स करेंगे, हीटिंग, कूलिंग, एक्सट्रीम चेंजेस टेम्परेचर में कर सकते हैं, डिपिंग सीड्स इन बॉइलिंग वाटर, फिर केमिकल स्कैरिफिकेशन हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है। It will become charcoal in time. The temperature of the acid and the length of time the seeds are soaked are very important. मतलब कितना टेम्परेचर दिया है एंड टाइम कितना दिया है सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट के लिए, this plays important role. The acid should be used at room temperature for a period of few minutes to several hours depending on the species. Seeds should be immersed in acid in a glass, china or earthenware container and should be stirred occasionally with a glass rod. Too much stirring will cause the acid to heat undesirably. The seeds must be removed from the acid just before any acid penetrates the seed coat. When the allotted time is finished, the seed should be removed promptly and washed thoroughly in several changes of water to neutralize completely all remaining acids. For some species, the duration of the acid bath depends on the specific batch of seeds and can only be determined empirically. After treatment and a thorough washing, seeds may be sown or dried and stored for several months. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये डिपेंड होता है वैरायटी पे, वैरायटी से वैरायटी डिपेंड करता है, इवन क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है। तो ये टेम्परेचर एंड टाइम पीरियड फॉर सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट ये दोनों वैराइटल और क्रॉप स्पेसिफिक है। तो यहाँ बताया गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट करने के बाद कई महीनों तक उस पर्टिकुलर सीड्स को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। Selected enzymes in seed coat like cellulase and pectinase are used for eliminating the seed coat. जैसे कि आप जानते हैं सेल्यूलोज और पेक्टिनोज होता है, पेक्टिन होता है, ये दोनों सेल्यूलोज और पेक्टिन हार्ड कंपाउंड्स होते हैं जो सीड कोट में प्रेजेंट होते हैं, बट सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज एंजाइम्स है विच डिग्रेड सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो इसको यूज करने से क्या होगा, दोज कंपाउंड्स आर इजीली एलिमिनेटेड फ्रॉम द सीड कोट। Next is organic solvent. Alcohol and acetone are used to eliminate seed dormancy. Coming to stratification. Seeds are moistened and exposed to oxygen for variable period at low or high temperature, or incubation of seeds at an appropriate low temperature over a moist layer before transferring to a temperature suitable for germination. Contracting inhibitor, destroying or dipping in KNO3, thiourea, ethylene, chlorhydrin and gibberellin, filling, chipping, hot water chemicals, shaking and pressure. Vigorous shaking and hydraulic pressure are used to weaken seed coat. Stratification में क्या होता है, stratification में embryo dormancy हटाने का हर काम किया जाता है। तो एसिड ट्रीटमेंट देखते हैं। फॉर फ्यू सेकेंड्स लाइक 15 to 60 सेकेंड्स में HCl और सल्फ्यूरिक एसिड में डुबा के रखते हैं। एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट पीरियड सीड्स आर वॉश्ड और रिमूव्ड, द रेमनेंट एसिड को वॉश करते हैं। एग्जाम्पल म्यूक्यूना ब्रैक्टेटा में एसिड ट्रीटमेंट अक्सर किया जाता है।
नेक्स्ट इज कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। यहाँ क्या करते हैं, seeds are exposed to abundant moisture, ample oxygen, and relatively cool temperature. It consists of placing the seeds in a moist medium of sand, peat, or vermiculite and holding a temperature slightly above freezing. मतलब बहुत ही cold condition provide किया जाता है under sand, peat, or vermiculite medium. This time varies between 1 to 4 months depending upon the type of seed. This permits the physiological changes within the embryo to occur. During this process, the level of endogenous growth promoting substances like gibberellins and cytokinins are increased. Like inhibiting hormones like abscisic acid decrease हो जाएगा, thus removing the block and permitting germination. इसको peaches या perennial tree species में यूज करते हैं जहाँ सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट है. ओके, दिस कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन टेक्निक मे टेक सेवरल मंथ्स. नेक्स्ट इज ड्राई स्टोरेज. Dry storage promotes after ripening in certain seeds which are dormant when freshly harvested. Freshly harvested seeds of many annuals and herbaceous plants fail to germinate until after a period of dry storage. Such post-harvest dormancy may last few days to several months. ट्रीटमेंट विथ केमिकल्स जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट से सोक कर सकते हैं या जिबरेलिक एसिड. पोटेशियम नाइट्रेट 0.2% ले सकते हैं. जिबरेलिक एसिड 200 to 500 ppm दैट इज पार्ट्स पर मिलियन. देन थायोयूरिया 0.2% सॉल्यूशन ले सकते हैं. प्रायर सोविंग हैज़ बीन फाउंड टू स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स. Soaking the seeds in gibberellic acid stimulates the germination of many citrus species like trifoliate orange, रंगपुर lime, then sweet orange, sour orange. तो इन सारे citrus species में केमिकल से ट्रीट करते हैं. थैंक यू. अब तक हमने डिस्कस किया कि डॉर्मेंसी क्या होता है, डॉर्मेंसी के लिए इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ डॉर्मेंसी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. देन वी डिस्कस्ड अबाउट stratification and scarification, where scarification is the factors which are related to seed coat that are addressed, and stratification is embryo related factor. Then double dormancy होता है कि embryo as well as जब seed coat में dormancy condition है, that is nothing but डबल डॉर्मेंसी. तो स्ट्रेटिफिकेशन एंड स्कैरिफिकेशन से हम कैसे दिस टेक्निक्स आर हेल्पफुल इन अवॉइडिंग और टू ओवरकमिंग द डॉर्मेंसी. तो ये सब हमने डिस्कस किया. आई होप दिस टॉपिक और द एक्सप्लेनेशन इज हेल्पफुल फॉर यू. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप ऑन कमेंटिंग. थैंक्स वंस अगेन.